Good morning to all my dear students. Today again here we will start with some of the GST entries with trade discount as well as with cash discount. Okay, I hope you have understood all the topics regarding GST journal entries which we have covered in the last 2 to 3 lectures. Okay, so without wasting time we are moving towards this question. See, what is the question they have given you? Journalize the following transactions in the books of Raymond for the month of April 2019. Okay, now the first entry is what? See, purchase goods from Kajal worth rupees 2 lakh at 5% trade discount and at 18% GST and half amount paid by check. Okay, now all of you just pay attention. See, if we are purchasing some goods at a 5% trade discount, so that trade discount we will not consider in our journal entry. Okay, what you simply have to do is you have to calculate the 5% of trade discount and minimize that much of amount from 2 lakh. Okay, so here is your first transaction. On the 1st April, purchase goods from Kajal worth rupees 2 lakh at 5% trade discount. So first 2 lakh into 5%. This comes to 10,000. Okay. So this 10,000 you have to minus from this 2 lakh. So your total purchase amount is how much? Total purchase amount is 1,90,000. Okay, this is your purchase figure. Then 18% GST and half amount paid by check. Now you have to pay this whole 1,90,000, out of which half amount the person, that is we are purchasing some goods and half amount we are making payment of this half amount by check. So simply 1,90,000 into 18% is how much? 34,200. So this is my GST on 1,90,000. Here I am writing 34,200 is my GST. Okay, out of which CGST is 17,100, whereas SGST is also 17,100. Is that clear? Okay, मेरे पास मैंने कुछ गुड्स परचेस किए फॉर रुपीज़ 2 लाख विथ 5% ट्रेड डिस्काउंट. तो वो गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई? 1,90,000. ओके, 1,90,000 के ऊपर CGST 17,100 एंड SGST 17,100. ओके, सो दैट टोटल कम्स टू 1,90,000 प्लस 34,200. So that total comes to 2,24,200. Okay, here I am writing. See, total with GST 2,24,200. Okay, out of which one half amount paid by check. मतलब half amount we are going to pay in future. Okay, so 2,24,200 के half कितने होते हैं? 1,12,100. So this much amount we paid by check, and the rest of the amount is what? Rest of the amount will be considered as credit purchase amount. Is that clear? Now based on this calculation we will see the journal entry. See this transaction, purchase. How much we have purchased? We have purchased 2 lakh rupees के goods with 5% trade discount. So 5% trade discount minus करके purchase value comes to 1,90,000. As per the GST rule, it is purchase GST. So purchase GST को क्या बोला जाता है? Input CGST and input SGST. So my input CGST and input SGST comes to 17,100, 17,100. Okay, मैंने हाफ अमाउंट पेड कैसे किया है? बाय चेक से. सो हाफ अमाउंट फॉर व्हाट? ये 1,90,000 प्लस 1,90,000 प्लस 17,100 प्लस 17,100. ओके, सो माय टोटल बिल अमाउंट इज हाउ मच? 2,24,200. Is that clear? Okay, out of which half amount I am making payment by check. So 2,24,200 का half कितना होता है? 1,12,100. So that much amount I am making payment by check,
and the rest of the amount, that Kajal accounts is my creditor, credit purchase. Is that clear? So my journal entry would be purchase account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to bank account to Kajal's account. Is that clear? Okay, it is lengthy enough, but try to understand. Once you will clear this concept in your mind, then all those entries are very simple enough. Okay, let's move on towards next entry. Purchased share of Mahindra company for rupees 60,000 and 1,000 paid as a brokerage. We have purchased some shares from Mahindra company. Okay, so it is one type of investment in shares. Okay, investment in share is one type of which account? It is one type of real account. Okay, and as per the real account rule, debit what comes in? So मेरी investment आ गई मेरे पास. ओके, फॉर हाउ मच? फॉर रुपीज़ 60,000 विथ 1,000 ब्रोकरेज. उतना मैंने पैसा खर्चा किया, सो उतने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट मेरी हो गई. ओके, एंड आई एम मेकिंग पेमेंट फॉर सच इन्वेस्टमेंट थ्रू बैंक. तो बैंक, मेरे बैंक में से पैसा कुछ चला गया. ओके, सो बैंक इज द गिवर. बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है एंड बैंक इज द गिवर. इज दैट क्लियर? ओके, एंड नरेशन वुड बी कंपनी इंक्लूडिंग ब्रोकरेज being purchased shares of Mahindra company including brokerage and amount paid by check. Is that clear? Okay, now let's move on towards next entry. On 9th of April, sold goods to Ravikant worth rupees 60,000 at 10% trade discount and at 18% GST. 1/3 amount received by cash at 5% cash discount. Okay, now listen it very carefully. Whenever we are giving cash discount, so that cash discount is only based on cash payment. Okay, it is only based on cash payment. What does it mean? मैंने 60,000 रुपीज़ के गुड्स खरीदी गए, परचेस किए. ओके, सपोज आई एम ऑन द स्पॉट मेकिंग पेमेंट ऑफ कैश. ओके, मैंने क्रेडिट परचेस नहीं किया है या फिर क्रेडिट सेल्स नहीं किया है. Okay, it is cash sales or it is cash purchase. So at that moment only I can get such cash discount. Okay, trade discount के बारे में ऐसे नहीं होता. Trade discount whether you are purchasing or selling those goods on credit basis or on cash basis. Okay, trade discount is applicable, but cash discount is applicable only and only when you are making payment or on the spot you are receiving that particular money or in the form of cash only. Okay, so cash discount तभी काम में आता है. Is that clear? Okay, now let's see what is the adjustment for this type of transaction. See, sells goods to Ravikant at 60,000 and at 10% trade discount. So सबसे पहले what first you have to do is you have to make the entry of trade discount. See here I have given this adjustment. Invoice price is how much? We sold goods for rupees 60,000 less 10% trade discount. What does it mean? The value of goods कितनी हो गई अभी? 54,000. Trade discount first you have to less. Okay, then what you have to apply? The second thing you have to apply for GST. Okay, क्या था हमारा ट्रांजेक्शन? क्या था? 60,000 के गुड्स वी हैव सोल्ड टू रविकांत एट 10% ट्रेड डिस्काउंट विद GST 18%. ओके, सो GST 18% है. सी हियर ट्रेड डिस्काउंट हो गया. ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद द सेकेंड थिंग इज व्हाट? यू हैव टू नॉट लेस, यू हैव टू ऐड दिस GST. 54,000 के ऊपर 18%. सो नाउ 54,000 इंटू 18% is how much? See here what they have given? 1/3 amount received by cash at 5% cash discount. Okay, 1/3 अमाउंट हमने रिसीव किया है. कैसे रिसीव किया है? बाय कैश. कैश रिसीव किया, सो उसी के ऊपर मैंने 5% डिस्काउंट भी दे दिया. सो 1/3 अमाउंट इज हाउ मच? 63,000 के 1/3 कितने होते हैं? सी हियर इट इज 21,240. 21,240 इज 1/3 अमाउंट जिसके ऊपर क्या किया है? कैश डिस्काउंट दिया है. सो 21,240 के ऊपर 5% कैश डिस्काउंट. हाउ मच इट इज? 21,240 इंटू 5%.
it is okay. So here they have miscalculated this thing. Which thing? See, first of all, what we have studied, we sold goods for rupees 60,000, out of which trade discount is how much? 6,000. So उसको लेस करने के बाद we got 54,000 as a value of goods. So मैंने goods actual में कितने में सेल किए? 54,000 में. Under it 54,000 plus GST also. So 54,000 plus including this GST मैंने goods कितने में सेल आउट किए? For rupees 63,720. आउट ऑफ विच मुझे कस्टमर ने कितना पैसा ऑन द स्पॉट दिया? 21,240. दिस इज व्हाट? 1/3. इट इज गिवन ऑन योर क्वेश्चन. 1/3 अमाउंट कस्टमर हैज गिवन, ऑन विच आई हैव गिवन हिम अ डिस्काउंट. क्यों? क्योंकि उसने ऑन द स्पॉट मुझे पैसा दिया, उसके ऊपर मैंने 5% उसको डिस्काउंट लगा दिया. नाउ दिस डिस्काउंट फिगर 900 इज एक्चुअली रॉन्ग. ओके, डिस्काउंट फिगर एक्चुअल में कितना है? 21,240 के ऊपर 5% इज 1,062. ओके, आफ्टर डिडक्टिंग दिस डिस्काउंट अमाउंट वी आर गेटिंग कैश फ्रॉम दैट कस्टमर. कस्टमर तो 21,240 देने के लिए रेडी है, बट हमने क्या किया? उसको डिस्काउंट दे दिया. सो अभी कस्टमर ने मुझे कितना पैसा दिया? कस्टमर ने मुझे 20,178. हियर आई एम राइटिंग 20,178 rupees cash I have received. Is that clear? Okay, now based on this we have to solve our journal entry. Okay, make the note of this total calculation and then we will move on towards our journal entry. Is that clear? So journal entry में क्या आएगा? This CGST SGST amount we will see. Okay, then value, sale value of goods, then discount allowed for rupees 1,062 and cash received for rupees 1,178. Now what you have to do is, once you will clear with this calculation, you first have to frame your journal entry and then journal entry के सामने हमें amounts लिखना है. Is that clear? So let's start. Here it is. Now in this, how much cash I have received, that thing will covered over here. How much cash I have received? I have received cash of rupees 20,178. Okay, यहाँ पर गलत लिख दिया है उन्होंने. 20,178 cash I have received. Okay, here it is 20,178 cash I have received. How much discount I have allowed? I have allowed discount of rupees 1062, not 900. 1062. Okay, next, that I have sold goods to whom? To Ravikant. Okay, जिसमें से उसने मुझे कुछ कैश दिया है and the rest of the amount is receivable from Ravikant. It is receivable. So receivable कहाँ पर आता है? डेबिट साइड में आता है. So rest of the 42,480 amount, this amount is right. 42,480 is receivable amount. Okay, my total sales is how much? Trade discount less करने के बाद my sales figure is how much? 54,000, जिसके ऊपर 18% GST चार्ज करके कितना आता है? CGST 4,860 and 4,860 is SGST. Okay, so cash account debit, discount account debit, Ravikant's account debit to sales account, to outputs CGST and to output SGST. Okay, this is one of the most important and at the same time difficult entry also. Okay, from your exam point of view it is important also, but ये basic आपको अगर clear होगा then only you can do this calculation. Okay, so make sure that you have note down this calculation. Okay, now let's move on towards next entry. Paid college fees of proprietor's son for rupees 1,000. College fees मैंने पे किया proprietors के son का. So what does it mean? Proprietors का son कौन है? He is outsider of the business. Okay, और proprietors ने क्या किया है? खुद के इस्तेमाल के लिए for personal use he have used those money. Okay, personal reason कुछ भी हो, लेकिन it is withdrawal, one type of withdrawal. Withdrawal is nothing but drawings. So entry would be drawings account debit to cash account. Okay, next is
purchase computer of rupees 50,000 with 18% GST. Now this GST is which type of GST? It is input GST. Okay, 18% and simple परचेस का एंट्री करोगे, परचेस के नीचे लिखोगे इनपुट CGST एंड इनपुट SGST. सी द एंट्री. कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 50,000, उसके ऊपर 18% CGST विथ SGST कितना होता है 4,500 टू कैश अकाउंट 59,000. इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट एंट्री. पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन द अबोव कंप्यूटर ₹2,000. ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी हमने पे किया. सो ट्रांसपोर्ट चार्जेस विल ऑल्सो कवर्ड अंडर कंप्यूटर अकाउंट ओनली. ओके, कंप्यूटर अकाउंट से हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस को अटैच कर देंगे. इज दैट क्लियर? सो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके, सपोज आई एम परचेसिंग दोज कंप्यूटर और ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस एक ही दिन पर अगर मैं पे करती, सो वो कंप्यूटर अकाउंट में ही मैं क्या कर देती. कंप्यूटर सपोज कितने रुपीज़ का था कंप्यूटर फॉर रुपीज़ 50,000. सो 50,000 में ही मैं क्या कर देती, ट्रांसपोर्ट चार्जेस को भी ऐड कर देती. इज दैट क्लियर? सो हियर दे हैव गिवन यू अ सेपरेट एंट्री. सो मेक द सेपरेट जर्नल एंट्री ऑल्सो. कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट इज पेड फॉर सैलरी ₹15,000 एंड पेड फॉर रेंट 5,000 एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर ₹15,000. Okay, very simple it is. Salary account debit to cash account, paid for salary 15,000 and rent account debit, advertisement account debit to cash account for ₹20,000. Okay, though these all are expenses. See, this rent account and advertisement account expenses. Debit all expenses. Salary paid, it is also expenses. So debit all expenses हमने debit कर दिया. Very clear? Next is on 27, sold goods to Salman for ₹20,000 at 18% GST. Now sales क्या है? So this GST is what? This is output GST. Okay, this GST is output GST. Yeah, what would be the journal entry? Sold goods to Salman for ₹20,000 and 18% GST. So this GST is what? This GST is my output GST. Okay, this is my output GST. And now what I am going to do is I am going to make a simple sales entry and sales के नीचे मुझे GST भी कैलकुलेट करना है on 20,000. So 20,000 के ऊपर 18% GST is how much? 3,600. Okay, so that 3,600 I will divide into CGST and SGST at 1,800 and 1,800. Is that clear? Here also 1,800 and for SGST also 1,800. Okay, so simple cash का एंट्री क्या होता है, सॉरी सेल्स का एंट्री क्या होता है? इट इज क्रेडिट सेल्स सलमान्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू दिस GST है, तो इसीलिए आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST. ओके, हियर इट इज. एंड सलमान के लिए मैंने कितने अमाउंट से सलमान को कितने अमाउंट से मैंने डेबिट किया है? ही इज माई डेटर फ्रॉम whom आई एम गोइंग टू रिसीव दिस 23,600 रुपीज़. ओके, ये 23,600 कैसे आया? 20,000 सेल्स फिगर एंड रेस्ट ऑफ द 3,600 इज माई GST. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. Purchase goods for ₹1 lakh at 12% GST and paid by check. So it is what? It is not credit purchase. It is cash purchase entry. Okay. See, purchase account debit for ₹1 lakh. Purchase account for ₹1 lakh जिसके ऊपर GST कैलकुलेट करने के बाद 6,000 and 6,000. 1 lakh के ऊपर 12% is how much? 12,000. Out of which 6,000 is CGST and 6,000 is SGST. ओके, एंड बाकी पैसे मैंने क्या किए? मैंने परचेस किया है गुड्स. सो सारे के सारे पैसे मैंने बैंक थ्रू, दैट इज चेक थ्रू पे किए. ओके, सो इसीलिए हु इज द गिवर? बैंक इज द गिवर. इज दैट क्लियर? ओके, एंड दिस इज लास्ट एंट्री. वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर ₹20,000. ओके, नाउ इट इज़ व्हाट? सफिक्स. ये क्या है? ये जो अकाउंट है दैट अकाउंट इज व्हाट?
दैट अकाउंट इज वन टाइप ऑफ सफिक्स अकाउंट. कोई भी प्रीफिक्स या फिर सफिक्स अकाउंट हो, सो इट इज कवर्ड अंडर पर्सनल अकाउंट. ओके, नाउ पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? वेजेस आते हैं? नो, आउटस्टैंडिंग वेजेस आर पर्सनल अकाउंट. ओके, एंड इट इज आउटस्टैंडिंग इन नेचर. आउटस्टैंडिंग इन नेचर मीन्स व्हाट? वी हैव टू give that particular outstanding wages, so we are giver of such outstanding wages in future, yes or no, and credit the giver, yes or no. So credit the giver के हिसाब से, और we are giver in the future for such type of wages, so वो कहाँ पर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा. एंड वेरी सिंपल इट इज. wages is what? wages is one type of expenses, so debit all expenses. So wages account debit 20,000 to outstanding wages 20,000. Is that clear? Okay, this is what our last journal entry. Very clear it is. Okay, all of you note it down in your notebook. Okay, just prepare it by yourself. Okay, and solve it by yourself. Okay, don't make any mistake in the calculations also. Okay, so here we are done for the day. Thank you, and don't forget to make the total in the last. Okay, total of debit side and total of credit side. Is that clear? Okay, so here we are done for the day. Thank you.